गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30, 7:30 बज चुके हैं और आइए चले आज संध्याकालीन इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। साक्षी, very good evening and I'm very much happy that you have joined just 7, okay, 7 p.m. itself, I think. And कैलाश प्रसाद जी, आपको भी शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैंडी आर, ओके, आपको भी गुड इवनिंग। सो डियर एस्पिरेंट्स, टुडे इज संडे एंड संडे वी टेक अप करंट अफेयर्स। सो समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों पर जो समाचार पत्र दी हिंदू में छपे उसी के आधार पर क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आपके समक्ष, बिकॉज जो भी प्रीलिम्स एग्जाम है यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज, वहां आपको एमसीक्यूज का सामना करना पड़ता है डियर एस्पिरेंट्स। सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रिंसिपल स्टेटेड बाय डब्ल्यूटीओ? WTO, World Trade Organization, all of you know, dear aspirants, so not a trading principle. ओके, व्यापार का सिद्धांत नहीं है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार। सो ए, फ्री ट्रेड, बी, promoting fair competition, C, treating other people equally, and D, lower licensing. Okay, dear aspirants, so what should be the answer to this MCQ? यदि आपके पास ये है, इन्वायरमेंट शंकर आईएएस हिंदी में नहीं है सर जी। अच्छा, बिल्कुल, तो हिंदी वाली पर्यावरण की किताब हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ओके मिस्टर कैलाश प्रसाद जी, क्लास के बाद हिंदी में पर्यावरण की जो बुक है यूपीएससी के लिए, उसको हम आपको निश्चित रूप से व्हाट्सएप करेंगे। सो इस क्वेश्चन कंसंट्रेट करें। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रिंसिपल स्टेटेड बाय डब्ल्यूटीओ? ए, फ्री ट्रेड, बी, promoting fair competition, C, treating other people equally, and D, lower licensing. So dear aspirants, what should be the answer to this question? If you are not knowing, the answer to this question is D. D is the answer, lower licensing. अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, okay, without discrimination, the trading system should be without discrimination. A country should not discriminate between its trading partners, giving them equally most favored nation or MFN status, and it should not discriminate between its own and foreign products, services, or nationals, giving them national treatment. मिस्टर परशुराम कुमार जी, आपको भी शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और इसके पश्चात ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड में ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो ट्रेडिंग प्रिंसिपल तय किया गया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर लाइसेंसिंग डियर एस्पिरेंट्स। तो इस तरह से द आंसर टू दिस एमसीक्यू इज डी। डी इसका उत्तर है। Consider the following. Okay, we have two statements. Smartphones, SSDs, electricity, etc. are exempted from the 25% tariff deal between India and USA. If you have gone through the recent news published in the Hindu, dear aspirants, you will be able to answer this MCQ. Number one, smartphones, SSDs, electricity, etc. are exempted from the 25% tariff deal between India and USA. Second statement, dear aspirants, because you know very well that UPSC asks such type of, this is the pattern, this is the typical style, I should say. Consider the following statements. Okay, so second statement, India is the importer in the world. So which of the statements above each are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, none of the above. So dear aspirants, if you are knowing the answer, you should write it in the chat box. So B, Mr. Parsuram ji बता रहे हैं second statement, but the first statement is correct. Okay, largest crude oil importer, आयात करता है crude oil का, this statement is not correct, dear aspirants, because India third largest
तीसरा स्थान है परशुराम जी क्रूड ऑयल इंपोर्टर में आफ्टर चाइना एंड यूएसए। सबसे पहला स्थान चाइना का है और दूसरा यूएसए का है और तब है हमारे देश भारत का स्थान। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेट अस एग्जामिन द फर्स्ट स्टेटमेंट। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर Trump signed thereafter only gives effect to the 25% tariff on Indian goods coming to the US. Even this has an exclusion list that includes finished pharmaceutical products, tablets, injectable and syrups, active pharmaceutical ingredients, electronic and ICT goods, semiconductors, smartphones, SSDs and computers, and petroleum products, crude oil, LNG, refined fuel, electricity, and coal. India is the okay. So, dear aspirants, the first statement is correct and the second statement is not correct. So, our answer should be A only, that is first statement. Dear aspirants, now here comes the question number 3, and this I am taking from science and technology segment. The previous one was from Indian economy segment. Dear aspirants, A is the correct answer, Mr. Kailash Prasad ji. So consider the following. Number 1, LVM3 was previously known as GSLV Mark 3. अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ओके, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सो LVM3 was previously known as GSLV Mark 3. Now the second statement, cryogenic rocket stage is less efficient and provides more thrust. So which of the statement above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, none of the above. So dear aspirants, almost all questions which I am going to put before you, okay, these questions are related to current affairs, dear aspirants. और ये 10 to 15 days, rather 1 week, एक सप्ताह, ओके, ये आपने ध्यान दिया होगा, gone through the newspaper that is the Hindu National Daily, तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे. So the first statement is correct, dear aspirants. Okay, LMV3 was previously known as GSLV Mark 3. The LVM3 launch vehicle Mark 3 was indeed previously known as the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3 GSLV M3. ISRO, Indian Space Research Organization, the LVM3 is ISRO's heaviest launch vehicle and is used for placing satellites into various orbits, including geosynchronous transfer orbit. और सबसे बड़ी बात है कि क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जो इसमें स्टेटमेंट है. सो क्रायोजेनिक इंजन इज ए रॉकेट इंजन that utilizes propellants stored at extremely low temperatures, especially liquefied gases like liquid oxygen, LOX, and liquid hydrogen, LH2. These engines are typically used in the final stages of a space launch vehicle due to their high efficiency and ability to generate significant thrust. So our answer is A, that is first statement only. Rest statements are not correct. Dear aspirants, now once again, one more question from science and technology segments based on the current affairs. Okay, today is Sunday. आज रविवार है और रविवार के दिन हम ऐसे प्रश्नों पे विचार करते हैं जो की करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. So try to keep in mind, dear aspirants. EOS 09 was designed to provide reliable remote sensing data for operational applications